एप्लीकेशन प्रोडक्ट है बट देना तो सर्विस है. That Right. is how the consumer mindset works. But jokes apart, these are some of the reasons why we had to forecast what will be required tomorrow. We call it the Tata Motors model, where we are making the engine, हमने टायर MRF से ली. And that is where we thought this is the right time now that we need to groom our entire team. और क्या better कर सकता हूँ? How can I make this better? How can I add value? How can I make my customers' life easier? So, Ajitji, you have been leading Retailware for more than 25 years with 9,000 plus installations, which is really a very big number. So, what made you decide that now is the time to invest in AI education for your team? Very interesting question, actually. So, if you mentioned more than 25 years. Yes, the first installation went live in 99. So, it's now the 26th year of operations. But that 25, 26 years journey is a testament to the fact that technologies have kept evolving, but we have not evolved with the pace of the industry. Being a product company, we can't change technologies on a daily basis. And this industry changes every year. Every year, some new platform, something comes up, and we can't simply switch because we are a product company. We've got thousands of customers running on an application, and we are on-premise solution providers. So if it was a cloud solution, then you can just simply change something on the cloud. The consumer doesn't get affected. Whereas in our case, somebody is running Windows 7, somebody is Windows 10, 11, etc., etc. You make a change, you disturb their life. Hmm. Secondly, being into retail solutions sector, we are providing billing and inventory solutions. That is the basic understanding. Of course, there's much more to that, but people think that this is a billing system. Now, as you can understand, if you go to a store and you're at the billing counter and something goofs up, My God. you're going to throw a tantrum. You're That right. is how the consumer mindset works. And that is where the fear psychosis among the merchant community arises that, अरे ये बंद नहीं होना चाहिए, disturb नहीं होना चाहिए, मेरा billing नहीं रुकना चाहिए. So Agree. that's one of the reasons why we have not been able to play around with or experiment with newer technologies to that extent. गाड़ी safe चल रही है ना, अच्छा चल रहा है ना, बहुत बड़ी बात है. That is very important. But over a period of we started VB6 and Access database. धीरे धीरे करते करते SQL सर्वर आ गया, फिर .NET आ गया, फिर उसके साथ then we went into mobility, then we went into mobility एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाया. फिर सेठ लोगों के पास तो आईफोन होता है, तो वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन तो स्टाफ के पास होता है. मैं तो सेठ हूँ. ओके, तो आपके लिए आईफोन एप्लीकेशन भी चाहिए. सो फिर क्रॉस प्लेटफॉर्म में गए, फिर PHP यूज करना शुरू किया, फिर गूगल क्लाउड किया, फिर कुछ एज्योर किया. सो वी डिड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द हार्ट मोस्ट ऑफ अस वर old schoolers. Now the time had come. So we were working on AI through other partners, other associates. So if we got an assignment and we required an AI component in that, yes, customer wants to come to us, he wants a solution. So we would outsource it and get it done and plugged it into our system and give it. But we call it the Tata Motors model, where we are making the engine. हमने टायर MRF से ले लिया, हमने Uh, स्पीकर JBL से ले लिया, बट हम इंजन बनाते हैं. बट अब टाइम आ गया कि हमारा इंजन भी 2 स्ट्रोक से 4 स्ट्रोक होना जरूरी है. Where the fundamentals had to change because AI brought such a major shift in the paradigm that now it has to be coming from within the system, not as an add-on. So systems right. had to be agentic, had to be AI driven. And that is where we thought this is the right time now that we need to groom our entire team. So there are two ways of doing it. One, you hire new guys with the new skills. And then what do you do with the guys with the old skills? निकाल दें. बट हमारा कल्चर तो वैसा है नहीं. हमने तो कोविड में भी एक को नहीं निकाला. Wow. मतलब पूरे कोविड में हमारी टीम 85 लोग हुई थी, हमने एक जने को कोविड में नहीं निकाला. Wow. We stuck it out. And being retail industry, we were finished. There was no revenue. Retail, whole market was closed. Retail was closed. But that is not in our culture to remove people. So we believe we are here for together for a long term. So we need to upgrade the skills of the existing team members. See, they're fantastic people. They're intelligent people. They're loyal people. They're committed. If they were not intelligent, they wouldn't be here. They also understand the retail domain, having worked with so many retailers. These are a lot of plus points. इसमें उनको एक टॉपिंग ऐड करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा चीज लगा के अगर वो प्रोडक्ट टेस्टी होता है, सो व्हाई नॉट. सो दैट्स हाउ दिस थॉट प्रोसेस केम अबाउट एंड वी गॉट इनटू. Wow, wow. So my next question would be for Navnath ji. So Navnath ji, Ajit ji told that how critical it is that your application should work. एक billing counter में you cannot afford a bug, right?
So when Ajit ji first announced that team would be going through an AI program या फिर हमारे टीम को एक AI प्रोग्राम से गुजरना है, आपका ऑनेस्ट फर्स्ट रिएक्शन क्या था? आप एक्साइटेड थे, नर्वस थे, शायद दोनों थे? Nice question. But I was actually excited because Ajit Jain ने जो हमें सिखाया है ना, जब I joined in 2006, so this is my 20th year in Retailware. So वाह! हमारे रिलेशन बहुत ही फ्रेंडली बन चुके हैं अभी तक. वो बहुत सारा होता है बट नॉट एट दैट लेवल. सो जब हमें एआई करना चाहिए, वैसे तो हम हर एक पीरियड में कुछ ना कुछ करते रहते हैं. बीच में हमने एंगुलर किया, अभी वी आर ऑलवेज ओपन. अजय सर भी हमें यस करना है, हम भी सर को बताते हैं सर हमें ये अपस्किलिंग करना चाहिए अभी. द टाइम इज टू अपस्किल ऑल आवर रिसोर्सेज, all that happens. So all of us were actually excited and we're looking forward to join a good AI program. Then I don't know how it come to us, but Ajay sir told us that this is one of the sessions we would like to attend. We can, frankly, we were trying to evaluate you. When we joined a session that was, I think, 15 days ago, we were trying to evaluate, and we found that this is the way we should go forward. This is the agency we should tie up with. And then Ajay sir, me and one of my colleagues, Sunil, we joined the program. And ये बहुत ही अच्छा बन गया वापस. मतलब जब हमने 20-25 लोग एक साथ सेशन भी कर रहे थे, अजय जी भी सेशन में थे, तो दिट वाज फंटास्टिक एक्सपीरियंस. वी लर्नड अ लॉट एक्चुअली. आपके बॉस, सीईओ आपके साथ स्टूडेंट थे। बॉस एज अ बॉस या कलीग, बॉस एज अ स्टूडेंट, कौन से बेटर है अजीत जी? को को So स्टूडेंट या को वर्कर या बॉस? let me answer this a different way. Ajit ji wears multiple hats, and whichever is convenient at that time, he wears that hat. So मैंने जैसे बोला कि हमारा बहुत friendly relations है, तो that is the reason why we become more friendly. As multiple times जब pressure भी होता है, कभी कभी deadlines होती है, तो he will demand, he challenges, and that's the thing we like actually. When someone like Ajay sir challenges us, then we are performing better, right? So we are raising the bar. He helps us to raise the bar. So beautiful, Yeah. so beautiful. Ajit ji, CEOs usually delegate their learning to their teams, right? But you chose to participate alongside your engineers, which impressed me a lot. Trust me. In fact, when I shared this with my CEO, he was very impressed by that. So, can you tell us about how you decided that you would be, you would like to be a student again? Actually, see, when I started this company, I started as a single developer. Okay, so I am a Microsoft certified solutions developer. So this was way back in between 99 and 2001. I completed those four certifications. So I'm a developer at heart, at core, and this is my passion. But Wow. at the same time, running a company and having your own passion, they are two different things. The pressures and pulls of management do take you in different directions. So I got hands off programming for a long time. But the architecture, I was involved with the architecture, with the backend database structure. And having been a developer myself, I could very well relate to the difficulties of the developers. At the same time, if somebody said, ये नहीं हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता? मतलब I do understand technology, so Right, that's not a, so that really helps having an inside view. right. When I talk to a client, so I am having the best of both worlds. I have practical experience, industry experience, and being a technology guy. So it helps bridge the gap and provide intelligent solutions which are useful to the customers. So now, ठीक है, I have a trustworthy team. They are a very capable team. So I just have to tell them and they'll do it. Khatam. But AI brought a different mindset. So when we started looking for AI, we were looking for an AI coach or AI mentor who would actually tell us कि AI में आप क्या कर सकते हो. हमको तो ये भी पता नहीं था कि हम क्या कर सकते हैं AI में रिटेल में. Right, वी डोंट नो, क्योंकि किसी कस्टमर ने कोई एक्सपेक्टेशन दिया नहीं. बहुत सारी right, चीजें कस्टमर एक्सपेक्टेशन से शुरू होती है और हम बना देते हैं. right, यहाँ right, पे वी हैड टू बी अहेड ऑफ द कर्व. वी हैड टू फोरकास्ट व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टुमारो. एंड आई एम नो नॉस्ट्रेडामस टू अंडरस्टैंड कि कल क्या होने वाला है. सो एआई की कैपेबिलिटीज क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है. तो
तो ये अगर हम अंदर से नहीं समझेंगे तो के उसका व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज व्हाट वी कैन डिलीवर वो हमको पता ही नहीं है ना. सो Right. वेरी इजी टू सिट इन ऑन अ चेयर एज अ सीईओ एंड से अरे नवनाथ ये कर दे, सुनील ये कर दे, ये हो गया वो हो गया. बट इसमें हो क्या सकता है ये पता होना बहुत जरूरी है. एंड I'm so glad, I'm so glad that I got hands on into this because first of all, most of us were new to Python. Right. So आप लोगों ने पहले पाइथन सिंटैक्स में, मुझे याद है वो स्क्वायर ब्रैकेट और कर्ली ब्रेस में इतना परेशान होते थे मेरे से, गलती कर लेता था. तो आपने पूछा नवनाथ को हाउ वाज इट हैविंग योर बॉस एज अ सीईओ एज अ, एंड आई एम श्योर दे विल गेट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पुल माय लेग्स ऑन माय, so that the concept of yeah, I'm right up there, I'm the boss and I'm everything, I'm like a god in the company, that has shattered absolutely low level. But jokes apart, but these are some of the reasons why I had to get, and because I got into it, then we could start visualizing what we could do, and that's the reason why our pilot became what it is. I mean, thanks a lot to you guys and the dedication and devotion of our team. And now you see, another challenge was कि हमारा काम चल रहा है, business is going on, customer Yeah. deliveries are on, and we are Right. in the service industry. I mean, though we are a product company, but we are in the retail, serving the retail industry, so we are almost a services company. Application product है, but देना तो service है. And 24 by 7, 365 days, that kind of environment. So now we can't spare time, अपना काम भी करना है. So that is where we chose the slot of 5 to 9 in the evenings, where instead of 6:37, by the time people would wind up between 6 and 7, उसकी जगह थोड़ा सा जल्दी wind up करते हैं, तो काम भी हो रहा है, and then we could further give time till 9 o'clock. And I really appreciate my team. I have no words to extend my gratitude to them that they all ventured to sit beyond hours daily. महीना भर 5 से 9 तक बैठना, 20 of them joining me and learning what Pulkit ji was teaching us. I mean, it was fun. It was fun learning and developing things while we were doing it. And thanks to you guys, you all helped structure the curriculum in line with our expectations. सो हमने जो शुरुआत की थी कि हम कोच और मेंटर, और बाद में हमने एक कोर्स ज्वाइन किया, जो वो कोर्स को हमने आपके साथ मिलकर डिजाइन, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्या आउटकम्स होने चाहिए, और आपने वो उसको बराबर करके, और सो इन द एंड वी नॉट ओनली गॉट ट्यूटर्ड ऑन Python and AI and philosophies and various LLMs, etc., etc. But we also found the coach and mentor that we were looking for. Thank you. It's our honor, to wear that hat, Ajit ji, and it's honor to have a very sincere student like you and Navnath ji in our batch. So all the industry, Ajit ji, Navnath ji, including retail industry, is evolving, right? So how do you see AI agents specifically transforming the way retailers operate in the next 3, 5, 6 years? Do you think because there has been multiple studies and people say that world before AI and world after AI are going to be different, just like electricity, just like computers, right? So what are some of the major impacts that your industry will see, or maybe in a positive way, in a negative way, in a feature way, because of AI agents? This question is a very good question for a big panel discussion kind of thing. But I am no great visionary or panelist to tell you what will happen in the future. We are also learning, we are also evolving. What I feel is we are just scraping the tip currently. जैसे भाई मैगी का इमेज ढूंढ लाओ, नेस्कैफे का इमेज ढूंढ लाओ, या ये उस इनवॉइस को मुझे डायरेक्टली रीड करके मेरा परचेज बुक कर लो. Right? So these are some of the early things which are very basic things. The next thing that I foresee, which we are already working on, as you know, is the inventory planning, inventory forecasting. Uh, it's very important to optimize the working capital of a retailer. पता भी नहीं चलता कब मेरा स्टॉक स्लो मूविंग से डेड हो जाता है and I am stuck with it. So just yesterday when I debuted the application to my first client, and incidentally, the first customer that we did was in 1999. He still remains my customer after 25 years. Wow. Okay? And it's a tradition कि हम नया कुछ भी करते हैं तो उनके यहाँ लॉन्च करते हैं, क्योंकि उनके मेरे यहाँ करना तो अभी तक पूरी तरह प्रूवन नहीं है, थोड़ा सा भी बगी है. वो बोलता है यार
25 साल पहले तूने कितने मिस्टेक्स मेरे यहाँ किए थे, और तू that he has that spirit, and that's really inspiring and motivating. So yesterday when I did that, this is a store in Ahmednagar, it's a supermarket, and all of a sudden the data that we could give him told him one of the items was ghee, and 1 किलो का घी 8 महीने से उसके पास पड़ा हुआ है, 2 महीने से तो एक भी पीस नहीं बिका है. एंड ही वॉज लाइक जैप्ड, ही सेड क्या बात है. आई मीन, this is something that I never thought I could get from systems, you know. We were supposed to be the guys who were intelligent enough. And now, instead of we becoming slaves of computers, now I am thinking computer is my slave and I'm using him for managing my business. So this working capital management is going to be a very big thing. Now, when you talk about agentic AI, that is where this is going to be a big part of multi-branch management, my logistics management. I mean, systems will talk to each other, multiple agents will exist. And if I have to ship something, I don't need to bother about it. My agent will talk to another agent and get the thing done, and it'll get picked up and delivered, etc., etc. So there are so many possibilities. I'm talking about the transactional part that we deal in. Now, if you talk about the other side, then there will be visual merchandising. There will be virtual trial rooms. Now, all these things have been in existence. But with AI, they're taking a absolutely different dimension. And they're going crazy. A lot of things will happen on e-commerce. A lot of things I will be able to deliver to my customer without asking. Those things will happen in a big way. And the possibilities are endless. I mean, you all would know probably much more than what we can even think of. That's so true, Ajit. Actually, this is the best time to develop and improve products because in the past, all the big, for example, take example of CRMs, right? Salesforce, Zoho, they had their market share already. So if someone tries to come into market with another CRM, there was very little possibility of them being successful or being able to crack the market. But now, if someone can build an AI first CRM, Right. something that used to take 1 hour, 2 hours, 3 hours to do in a traditional CRM, that happens by just one voice message, they can replace any traditional tool in no time. And that's why, Ajiji, I'm so proud, so happy that you took this wise decision of upgrading not just yourself but your team and all of your products. I think this was a very timely decision, and I really congratulate you for that vision that you had, that even without asking client, even client without asking for it, you went ahead and started exploring things. So one very good benefit of a CEO or a CTO attending such workshop is the ideas that comes to our mind when we are attending, and when we are watching instructors implement different patterns. So were there some outstanding ideas that came to your mind, while you were going through the curriculum? Instructor may be teaching something completely different, but maybe something significant came to your to your mind, something like that, Yeah, actually, what we've just delivered is a RAG-based system. So right? that came about while Pulkiji was explaining the basics, and just as we were evolving, these thoughts started coming to our mind, and fortunately, our approach was a very proactive one, and we started actually applying it to our existing systems. Another thing that we have done in this exercise, see, everybody knows that if you're talking to ChatGPT or any other LLM, you are exposing your data. The other option is to build your own LLM, private hosted LLMs. Now, this is another fear in the minds of the merchants that मैं अगर ये यूज करता हूं तो मेरा डेटा चला जाए. And I'm so happy to tell you that we have been able to do this without compromising on their data. None of Wow. their data goes outside their system, and they're able to get the power of AI. That Wow. is something very exclusive, Lovely. very exclusive. That is very exclusive indeed. Again, your architecture, your coding experience, everything, combined with agentic AI capabilities. So beautiful. By Yeah. the way, Ajitji, for the paid APIs like OpenAI, Gemini, and Claude, now they have clearly mentioned in their terms and conditions that if you're paying for the API,
the data will not be used to train their models. So previously it was missing from their terms and conditions, but now all the three major ones, OpenAI, Anthropic, Claude, and Google, they clearly write in their terms and conditions that if you're paying for them, if you're using a free model, then they will be Correct. using, Correct. then we will be their products. Yeah. But if you are paying for it, they won't be using, and they have given it in writing. So that's another bit of relief from the data privacy point of view. But Correct. your approach is super interesting. I'm so Another impressed. thing, sir, is very frankly, how much do we really trust them? They're Right, making a statement. Is it going to be really true? How much do they know about us? We are paying for so many things. right, But still, everything is being prompted from here and there. right, So तुम right. तो That's मैं correct. आई डोंट बाय दैट थियरी कि ये लोग बोलते हैं तो ऐसा होता है आई थिंक वी शुड टेक देम विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड जस्ट वॉक ओवर दैट थिंग आई डोंट दीज पीपल अब्यूज्ड माइक्रोसॉफ्ट अर्लियर डेज कि हम लोग ओपन सोर्स है माइक्रोसॉफ्ट इज कैपिटलिस्टिक Yeah, पैसे लेते definitely. हैं वो छापते हैं लूटते हैं हम लोग ओपन सोर्स हैं आज बताइए क्या ओपन सोर्स फ्री में चल रहा है क्या हो रहा है हर चीज Right, के तो पैसे लूट रहे हैं right, So we've gone back to Microsoft Outlook from Gmail because that proved out to be much more expensive. right, जी सूट दिया 100 लाइसेंसेस फ्री बहुत साल यूज किया right, अचानक एक भाई साहब ये 100 आप तो कल से 2.5 लाख रुपए देना पड़ेगा साल का right. सो ये लोग का मुझे भरोसा नहीं है मेरी मेरा अनुभव इतना अच्छा नहीं है जितना भी दुनिया देखी है Very आई true. स्टिल वोंट ट्रस्ट देम As far as we can keep our data safe from them, the way you have done, the better, right? इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक It's प्रिकॉशन always better to take precautions. I cannot agree more on that. आपके ऑफिस में सब फिर भी अगर कोविड चल रहा है तो आप मास्क पहन लो जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड Wow. Right. Wow. So true. So true. One thing we have experienced, Navnaji, Ajitji, two things actually. So we have different departments within our company, and the department head of whichever department head is AI first, they are very keen to learn AI. That entire department is very enthusiastic about AI, so people tend to mimic their leaders. And Ajiji, you're setting a very good example for your team by being, because I get to know from my instructor that you are one of the most enthusiastic students of your batch. Um, Second thing that has happened in our company because of AI is that our communication has changed a lot. So there is a shift in the way we are approaching problem solving. So whenever a problem comes, 2, 3, 4 years back, we were talking in different way, and now we are talking of different solutions. So there is a cultural shift that we are experiencing in almost all of our departments. So are you experiencing any such cultural shift in your organization? Because you've just recently started learning AI, you've recently started, diving deep into AI and witnessing its capabilities. there is no major shift in that sense, but I see a lot of energy and enthusiasm within the whole team. Like you said, leaders, it's not only me, it's all the team leaders are attending this session. So all our project heads, they are all part of this training. And their subordinates are naturally, we're looking up to them and participating there. But because all the seniors and leaders are gaining more knowledge, more exposure, the possibilities that can arise and that they're thinking in that direction कि और क्या better कर सकता हूँ, how can I make this better, how can I add value, how can I make my customer's life easier, because culturally we are very customer oriented, we work for the customer, उसकी लाइफ किससे आसान होगी वो हमको करना है, that is the basic premise on which we work. टेक्नोलॉजी इज इमटेरियल, आज एक आएगा कल दूसरा आएगा, बट द कोर डायरेक्शन हैज टू बी मेंटेन्ड. सो उसमें नाउ दैट एनर्जी इज सुपर एंड द Wow, रिजल्ट्स दैट वी हैव सीन विद द पायलट लॉन्च विद द कस्टमर इंटरेक्शंस इज माइंड ब्लॉक. wonderful. So wonderful. Now, Nachi, I would like to know from you before and after. So again, this entire AI space was new for you and your engineers. So how were you feeling about this AI thingy? Of course, you said you were excited, which is again a fantastic attitude.
But again, the day one of the program versus now when you're towards the end of the program, uh, what's the difference that you experience in yourself and your team, Navnath ji? या श्योर। तो उससे जाऊंगा। Ji. जब हमने एआई का मतलब एआई सुनना स्टार्ट किया, एआई होता है, कुछ होता है ऐसा, तो यूर थिंकिंग दैट हाउ डिड हेल्प इन रिटेल यार, वी आर अ कॉस्ट कंपनी, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, वी आर मेकिंग सॉफ्टवेयर। सो वहां पे क्या, वो तो बेचना है, खरीदना है, बेचना है, एआई, दैट वाज आवर थॉट प्रोसेस इन द बिगिनिंग, आई मीन फ्यू डेज बिफोर द बिगिनिंग, या देन वी watch some videos, heard something, listen from broadcast, etc. Then we decided that let's explore something if it really helps us or not. देन जो मैंने आपको बताया कि हमने आपका एक मास्टर क्लास या कुछ था वो अटेंड किया, 2-3 घंटे का था वो। एंड देन पुलकित जी शोड अस द एजेंटिक, एक एजेंट दूसरे एजेंट के साथ बात करेगा, ये करेगा, और Mhm. फिर बोले अलग चीज है, इट्स रियली यूजफुल। एंड देन वी डिसाइडेड टू लॉन्च आवर प्रोग्राम एंड देन टू ट्रेन आवर रिसोर्सेज एज वेल। So when we spoke to our members, everybody was excited. Yeah, maybe 1 year experience, 5 years, 10 years, 15 years. Everybody was excited, equally excited. And then we started our trainings. So first of all, Python, AI, data science, ये सब रिसेंटली आई हुई चीज है, तो सबको उतना कन्वीनियंट था नहीं, कंफर्टेबल थे नहीं सब। लेकिन जैसे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया, पुलकित जी ने भी पाइथन का बेसिक्स लिए, तो कुछ बच्चे से यूज टू हो गए हम सारे, मतलब तो वो Wow. कंफर्ट लेवल बढ़ गया। और फिर बीच में नावेद जी ने फास्ट एपीआई सिखाया, एंड फास्ट एपीआईज वर रियली फास्ट। हमने Right. डॉट नेट के एपीआईज बनाए, हमने वीबी में काम किया, क्रिस्टल में काम किया, सिक्वल सर्वर में काम किया, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में काम किया हमने। बट फास्ट एपीआई 2 दिन में बनाना स्टार्ट किया, सो दैट मोटिवेटेड अस मोर एक्चुअली। Wow. एंड देन Wow. वो हो गया, फिर डेटाबेस का कनेक्शंस वगैरह कैसे, सिक्वलाइट भी यूज कर सकते हैं, सिक्वल सर्वर भी यूज कर सकते हैं। अर्लियर वी वर स्ट्रगलिंग टू यूज मल्टीपल, लाइक टू मेक आवर एप्लीकेशन DB agnostic, and then we Hmm. used effortlessly that SQLite and SQL Server. So that was again exciting, and that excitement increased a lot. Wow. And then Wow. फिर कुछ हिचकिचाहट होती नहीं थी। अजीत जी भी, सर ये ओपनिंग ब्रैकेट कौन सा दूं, मैं स्क्वायर ब्रेस दूं, प्रॉब्लम ही नहीं, हम नहीं पूछते। Everybody was so open then, like, so Wow. that again, credit goes to the leader. Wow. That's the One thing. more important thing I'd like to add, Navnath. Yeah. हम 10 लोगों का टीम आइडेंटिफाई किया था कि इनको ट्रेन करना है, फिर चुनिंदा लोगों को किया, फिर जी. आप लोगों का मेल आया कि आप चाहो जितने लोगों को ले लो। जी. तो देन सडनली वी सेड यार व्हाई नॉट, आई मीन that is where we Yeah. doubled the strength from 10 to 20, and I mean that was such a wonderful gesture from your side, so generous, and Correct. that we ended up being major beneficiaries of that. Yes, Thank you. yes, Wow. Thank you absolutely, so much. absolutely. So So nice. ये टीम डिसाइड करना भी, इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इन इटसेल्फ। जो हम पहले 9-10 बंदे चूज करने थे, बट जो सर ने जैसे बताया कि यू आर सो जेनरस दैट वी कुड ऐड सम मोर, and then we didn't make injustice to anybody. Everyone who was interested joined us, so that was a good thing again. Wow. Wow. Yeah. So there are lots of, and this question is to both of you, Ajit ji and Navna ji. There are still lots of companies. They are either in the comfort zone, कि काम चल रहा है यार, क्यों डिस्टर्ब करना, क्यों रिस्क लेना. Second चीज, there is time investment, right? There is money investment involved. I know lots of companies who are on the verge of taking decision. They see that agentic AI is taking over the world almost, but they are on the edge. They are not able to take the decision. किसी से भी पढ़ो, irrespective of from where they learn, how they implement. But what would you say to them? How would you encourage them to take the right decision of investing their resources right now? This is the right time, to advance your team, to advance your products, and to advance yourself. Let me tell you in 2-3 sentences. Let me answer this question. Like this is a paradigm shift for all of us, I can say. So we have experiences with Nokia and Kodak, right? They could not change their thought process on time, and we can see the impacts. So this is the same situation going to happen.
if you cannot take the decision, right decision at this time, you would probably be Kodak or Nokia in today's US maybe. I can say, yeah. Very well Very well, described. Very well very described. And if they don't take decisions, it is at their own peril. I mean, चॉइस नहीं है. अभी भी हम डॉस पे थोड़ी ना काम करते हैं. right, तो इवॉल्व होते गए ना. right, हम तो right. विंडोज 95 के जमाने से काम कर रहे हैं, फिर 98 आया, उससे पहले विंडोज पर वर्क ग्रुप्स था, वो भी यूज किया है. तो दोज थिंग्स हैव केप्ट ऑन इवॉल्विंग एंड नाउ so many platforms, so many devices. I'll just tell you, we have been traditionally working ahead of time in terms of technology adoption. When there were no smartphones, I'm going back to this, we've never discussed this topic. 2001, I'm talking 2001. We went to a restaurant to have डिनर. वी गॉट वन ऑर्डर, छोटी सी ऑर्डर थी बट, तो टीम के साथ डिनर पे गए. और वो गार्डन रेस्टोरेंट था, बड़ा था. तो वहां पे सब्जी आई, दो रोटी और लाना भैया. तो दो रोटी आई, तब तक खाना पूरा ठंडा हो गया था. बाय द टाइम यू वेंट टू द किचन एंड केम बैक. Hmm. देयर वी थॉट कि अगर उसके हाथ में कोई डिवाइस होता, उससे वो ऑर्डर देता, किचन में प्रिंट हो जाता, अगला वेटर आते आते दो रोटी लेके आता, तो विद इन 3-4 मिनट्स मेरी रोटी मेरे टेबल पे आ जाती. True. ऐसा होता तो कितना अच्छा होता. ये मैं 2001 की बात कर रहा हूँ. तो हमने पॉकेट पीसी खरीदा. हमने 2001 में अहमदनगर में हमारे ऑफिस में वाईफाई नेटवर्क था. जब वाईफाई राउटर्स मिलते नहीं थे, इंपोर्ट किया था हमने यूएस से. उस छोटे गांव में बैठ के हमने ये सिस्टम बनाया था. Wow. स्मार्टफोन्स भी नहीं थे. उस डिवाइस में ब्लूटूथ भी नहीं था, वाईफाई भी नहीं था. उसको पीसीएमसीआई जैकेट लगाना पड़ता था, पीसीएमसीआई कार्ड डालना पड़ता था, तब जाके वो डिवाइस वाईफाई इनेबल हो रहा था. सो वो किया हमने. उस जमाने में 2-2.5 लाख रुपए खर्च किया उसने. उस जमाने में, मतलब बहुत बड़ी बात है ये, उस जमाने में 2-2.5 लाख रुपए गैजेट पे डालना. और इट ऑल केम टू जीरो बिकॉज देयर नो बायर्स, बिकॉज Right. नोबडी वांटेड टू वाईफाई नहीं था इन्वेस्ट इन उनके पास. हार्डवेयर. वो Hmm. हार्डवेयर 65,000 का राउटर था. जी, वाईफाई एक्सेस पॉइंट 65,000 का. जी. कौन लेगा? उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं. खर्चा कब हुआ? Wow. जब आईफोन आने के बाद लोगों को गैजेट्स पे खर्च करने ये ट्रेंड शुरू हुआ. तब तक गैजेट्स पे खर्च की बात होती नहीं थी. सो मैं उस टाइम का बता रहा. तो हमने वो तब किया था. तो हमने ये कभी भी पीछे नहीं कि हमको ये क्यों किया, क्या किया. कुछ नया है ना, करना है. रास्पबेरी पाई आया, करना है. आर्डिनो आया, करना है. हमको टेक्नोलॉजी में कुछ भी आएगा हम करेंगे. आरएफआईडी गारमेंट स्टोर में हम 2009 से करते आ रहे हैं. किसी ने खरीदा नहीं, लेकिन हमने नेशनल गारमेंट फेयर में स्टॉल में दिखाया कि ऐसा आरएफआईडी से बिलिंग होता है, देखो. लेकिन कोई लेने वाला नहीं था. आज डिकैथलॉन आया, 2-3 साल से उन्होंने आरएफआईडी शुरू किया, तो सब जगह पॉपुलर होने लगा. फिर हमारे Right. कस्टमर भी लाइव होने लग गए. तब तक हम तब से इन्वेस्ट कर. सो हमने Wow. कभी देखा नहीं है. इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि एआई में हम पीछे रह गए. हम बहुत लेट एडॉप्शन किया मेरे हिसाब से. लेट्स नॉट लुक एट, ठीक है मार्केट में तो कोई पॉस सोल्यूशन एआई इनेबल्ड नहीं है, हम पहले हैं, वो ठीक है. बट फिर भी हमारे स्टैंडर्ड से ये बहुत लेट हो गया. ये हमको 3 साल पहले करना चाहिए था. बट इन अ वे इट्स गुड हम लेट हो गए, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी मैच्योर है और यूजेबल लेवल पे आ गई है. तब थी लेकिन यूजेबल इतनी नहीं थी. आज वो यूजेबल हो गई है. जैसे हमने पॉकेट पीसी में किया, इतना जल्दी किया कि वो यूजेबल नहीं था, एक्सेप्टेंस नहीं था. 10 साल बाद वो मार्केट में एक्सेप्टेंस हुआ. Right. इस बार हम टाइम पे चल रहे हैं, अहेड ऑफ टाइम नहीं. बट इसके बाद अगर कोई सोचता है कि आगे देखेंगे, तो आई थिंक दे विल बी लैगर्ड्स. They will be chasing the market. So true. I totally agree to it, Ajit ji. Again, another thing for both of you. Again, superb insights. I mean, I'm so much enjoying and so much learning from each and every word of both of you. Another question again for both of you is that, you know, it's a very old company, you have gone through a lot of training programs. So are there any aspects of progression schools teaching style that you feel is most effective or that has been most effective for you? For example, our teaching methodology or project driven teaching or anything that stood out for both of you. I would be very happy to know that, please. Ravanath, you can go first. Of course, of course. Uh, so the teaching style is really very, very, very good. Like your team ensures that each and every member who is participating is understanding, is completing the task, and then you can say like वो हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं, तो that is always a good thing. और किसी को भी फिर लेफ्ट आउट का जो फीलिंग होता है वो होता नहीं है. हम Hmm. सब खुल के ये ऐसा ऐसा करना है, हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं.
और किसी का हुआ नहीं ऐसा होता नहीं है, सबका होता है। जब तक ऐसा डन डन सब डालते हैं तो दैट इज गुड साइंस। और फिर वो अगर मेरा कुछ काम होता नहीं, फॉर एग्जांपल मुझे एक टास्क दिया गया एक फंक्शन बनाने का, अगर वो नहीं होता है तो आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड। देन आगे चढ़ाएगा वो जो टीचिंग का जो भी सिलेबस है, और मेरा पहले ही कंप्लीट नहीं हुआ तो वो थोड़ा सा लेफ्ट आउट वाला फीलिंग आ जाता है। फिर वो आगे का भी नहीं करता, पीछे का भी नहीं करता। तो जब तक सब अंटिल ऑल ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज, वो बहुत ही इम्पेक्टफुल टीचिंग स्टाइल है आपका। अमित जी ने और नाविद जी ने पहले सोचा भी, मतलब जो हमारे साथ जैसी बातें हुई थी उनकी, तो इनको क्या सिखाना पड़ेगा, हर एक मेंबर का उनको स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑलमोस्ट पता चल सिखाना पड़ेगा। So that understanding was fabulous, and that made him uh, the really good teacher or the trainer, what I can say. तो Yeah. सो गुड। सोशल लर्निंग ऐसा बोलते थे कि रिमोट में नहीं हो सकता, जो एक क्लासरूम में एक जो बूट कैंप का माहौल Perfectly. बनता है। That myth is busted. Even for us, whether we would be able to do online learning course effectively, it didn't feel like that. It felt as if we are together. Like Navnath said, handholding was perfect, very well done. Beyond that, the curriculum was designed discussing with our team members. तो वो आपने देख के किया तो क्या हुआ, तो रिलेवेंट है, हमको वो नॉलेज मिला। ना कि हम अभी आपका कोर्स पूरा करेंगे, उसके बाद फिर हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे, फिर कुछ ना कुछ आएगा, फिर तब तक तो कोर्स भी खत्म हो गया। यहाँ पे द नॉलेज ट्रांसफर वाज सो इफेक्टिव दैट वी वर एबल टू स्टार्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली एंड दे वर कीपिंग पेस विथ अस। जैसे मैंने बोला कि मेरा सिंटैक्स पुअर था क्योंकि मैं बहुत बड़ा गैप हुआ था, बट ही वॉज वेरी पेशेंट विथ मी एंड he said, nah, ठीक है, ये रह गया वो रह गया करते कराते। And that is very heartening. I mean, I didn't feel like missing a class. I was in Amritsar that day and I attended from Amritsar also. तो वो छोड़ने का मन नहीं होता है, उतना एंगेजिंग था। एंड रियली congratulations to you guys. Fantastic. थैंक यू सो मच अजीत जी। आई थिंक इट्स वेरी गुड टाइम आई शुड गिव स्टेज टू पुलकित, आपको अगर कुछ भी पूछने का मन हो। So, first of all, thank you very much, Ajit ji and Navnath ji. And जैसे कि आप लोगों ने भी अभी बताया कि सेशंस आपको करता था बिकॉज यू वर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी टाइम, और वो सारे। एंड इवन आई फेल्ट द सेम थिंग बिकॉज जैसे क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, इफ यू आर टीचिंग सम स्टूडेंट्स, राइट, एंड इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इनफ, द इंस्ट्रक्टर फील लाइक दैट आई एम doing it for the waste. This is not something that I should do, right? But each and every participant in the class was so much enthusiastic. Each and every person was so much in sync with the instructor that I felt like coming to the session, that I should be there and I have to help them, and I have to help them in achieving everything whatever they want, right? And similarly, what me and Navnath did, we took separate sessions as well, separate calls as well. If you want something else, we can incorporate that also in the curriculum. So we were designing and we were implementing things simultaneously, kind of, right? So आपने उस पेस को कैसे पिकअप करा? जैसे आपने बोला कि यू आर टेकिंग अप सेशंस एंड साइमल्टेनियसली यू आर डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एज वेल एंड डेमोइंग दैट टू द क्लाइंट एज वेल, राइट? सो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? लर्निंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड डेमोइंग, तीनों चीज पैरेलली चल रही थी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए? उसका थोड़ा श्रेय मैं लूंगा। मैंने इनको बहुत ड्राइव किया, मैंने काफी इनको परेशान किया क्योंकि see, I was so excited with what I could see, and I'm very impatient by nature. When I feel कि अरे ये होना चाहिए, तो ये आज होना चाहिए, कल क्यों? तो that's where we started developing simultaneously. ना कि कोर्स खत्म होगा हम पूरा सीख लेंगे, नॉलेज हासिल करेंगे, फिर हम बनाएंगे। नहीं, मैं बोले ये आज आज अभी क्यों नहीं? सो दैट और उसमें आपका सपोर्ट बहुत अच्छा रहा कि many times we were stuck and you would say, okay, send me the form. Break में मैं देख लेता हूँ. I will get back to you. So you would study the whole thing and tell us, okay, this is a fundamental mistake. ये import गलत हो गया, ये spelling गलत हो गई वगैरह. So those things helped a lot. But the driving force was that the urgency to see the smile on my customer's face. कि क्या बात है, मजा आ गया. That हमको कल मिला. मतलब वो that was what actually drove us to simultaneously develop and deploy while learning. तो ये तो अभी लैंग चेन है, अब तो लैंग ग्राफ करना बाकी है। हम तो लैंग चेन में लाइव हो गए, तो उसका वर्जन 2.0 वो रिलीज होगा। बट तब तक वो पेशेंस ही नहीं है। वो अगर दिख रहा है किसी का बेनिफिट है तो क्यों उसको होल्ड कर रहा हूं मैं?
मैंने बहुत पुश किया, ड्राइव किया, और टीम ने भी जबरदस्त रिस्पॉन्ड किया। वैसे उनको आदत हो गई है मेरी। Perfect, perfect. तो इसी से I'll basically extend the same question and ask one more thing around this part only. So you were implementing these things at the customer side, right? And you were actually seeing that wow moment, right? So can you tell us any particular reaction from the customer, or let's say any particular instance जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि हाँ, it was worth it studying AI, it was worth it implementing it as well. सो वो मोमेंट आपके लिए कैसा था, कौन सा था बेसिकली? कई शेयर उनको घी का दिखा कि स्टॉक पड़ा हुआ है, तो मेजर उनका जो था कि अरे यार ये तो सच में, मैं वेरीफाई करता, उसने वेरीफाई किया और सच में वो ठीक था। एंड ही इज वन ऑफ द रिटेलर्स, वेरी फ्यू रिटेलर्स, हु एक्चुअली मेंटेन्स हिज स्टॉक विथ द सिस्टम इन सिंक। मेजोरिटी ऑफ द रिटेलर्स आर वेरी केयरलेस अबाउट देयर स्टॉक्स। सिस्टम में कुछ और होता है, फिजिकल कुछ और होता है। इनके पास सिस्टम और फिजिकल लगभग हमेशा मैच होते हैं। By and large, they are matching. 95 to 97% of the items you will find same stock on the shelf as it is in the system. So when he saw this, he was flabbergasted. But his expression was कि हमने कुछ सोचने के पहले कि हमें ये चाहिए, इसकी जरूरत होगी, उसके पहले आपने परोस दिया हमारे सामने। और वो देखने के बाद मुझे एहसास, तो मुझे जरूरत थी लेकिन मुझे पता नहीं था, और मैंने आपने सामने सर्व कर दिया। ये जो वाव मोमेंट था ना, ये बहुत जबरदस्त था। और एक क्लाइंट का आया कि सर, यू हैव गॉन बियॉन्ड, दिस इज बियॉन्ड लिमिट्स व्हाट यू हैव शोन मी टुडे। आई कुड नेवर इवन इमेजिन। वी हैव बीन लिसनिंग टू एआई एंड सोशल मीडिया एंड वीडियोस एंड यूट्यूब्स, और ये होता है, पिक्चर बन जाता है चैट जीपीटी से, ये होता है, वो होता है। हमारे लिए क्या, हमने कभी सोचा ही नहीं। ये अब तक, जैसे नवनाथ ने भी पहले बोला कि हमने सोचा नहीं कि एआई से पॉस कंपनी क्या कर सकती है, पॉस सॉल्यूशन में क्या इंक्लूड कर सकता है। तो वैसे उन्होंने भी सोचा नहीं है, और उनको जब हमने ये दे दिया कि आप आपके डेटा से चैट कर रहे हो भाई साहब, और पूछो सवाल, और जो नॉर्मली नॉर्मल रिपोर्ट्स में नहीं होता है, ऐसे भी सवाल टेढ़े मेढ़े करके पूछो, और उन्होंने पूछा। जैसे मैं आपको प्रॉम्प्ट बताता हूँ कि व्हाट आइटम्स आर इन स्टॉक विच आर ग्रेटर देन रीऑर्डर लेवल बट दे हैव नॉट बीन सोल्ड इन द लास्ट 2 months, प्लीज इग्नोर आइटम्स वेयर रीऑर्डर लेवल हैज बीन सेट टू जीरो। ऐसे करके सब मिला के दे दिया पैराग्राफ जैसे। और उसने बराबर वही आइटम दिए जो 2 महीने से बिके नहीं है, लेकिन चाहिए उससे ज्यादा पड़े। सो ये जो उनका एक्सप्रेशन था, दिस इज अनबीटेबल, मतलब पूरा मेहनत वसूल। परफेक्ट सर। एंड ये आई एम श्योर अबाउट, यस यस प्लीज गो ऑन प्लीज। यस, सो ये जो स्ट्रेटेजी बनाई थी सर ने भी हमें, दैट वाज रियली वेरी एन एक्सेलेंट थिंग एक्चुअली। व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज हम क्या करते, कोर्सेज करते, ज्वाइन करते, कंप्लीट करते, फिर दूसरे काम आ जाते, कस्टमर का रिक्वायरमेंट्स होते, डेडलाइंस होते, प्रेशर होता है। ये सब चीजों में जो सीखा है ना वो तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो सीखा है अभी, उसमें मास्टरी थोड़ी नहीं है, तो बहुत टाइम लेता है वो। तो जो ये थॉट प्रोसेस भी आया, ये स्ट्रेटेजी आई कि ये सब पैरेलली हम प्रोडक्शन में भी कुछ तो भी करते हैं, और फिर वो करते करते कस्टमर का फीडबैक भी वाज अमेजिंग, देन द मोटिवेशन लेवल वेंट अप सो हाई, लाइक, सो आई थिंक द स्ट्रेटेजी of doing parallelly was the fantastic thing in this particular course of training. राइट राइट, I think परफेक्ट। this would be the recommended strategy for all companies that you work with. They should do it right away. Right. And I mean, that's kind of perfect when you are serving to some client and when you are serving to some customer and you get these kind of validations from them, then that is the topmost thing that you can feel, right? That is the topmost emotion that you can feel as a company, right? बिल्कुल बिल्कुल। And obviously, you guys are building a lot using AI, right? You have built this SQL agent that can actually talk to the databases, right? Similarly, at the same front, in retail sector and POS sector and all, what are the future products that you are thinking of, or what are the future features that you are thinking of implementing in your current product? कि किस तरीके से आप इसको आगे लेके जाना चाहेंगे? Navnath, you go, then I'll go. या सो मेरे मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज फॉर अ रिटेलर इज कि उसका स्टॉक कितने बार मूव होता है, वो कितना उसी कैपिटल में, उसी मतलब अमाउंट ऑफ मनी में कितने बार स्टॉक रोटेट कर सकता है। द मार्जिन डिपेंड ऑन दैट। तो कम से कम उसका डेड स्टॉक ना ही हो, जीरो हो जाए,
फिर जो बिकता है वही वो ब्रांच में स्टॉक भेज पाए, ये टाइप की जो एनालिटिकल क्यूरीज या एनालिटिकल थिंग इफ यू कैन प्रोवाइड यूजिंग एआई, देयर विल बी नथिंग लाइक दैट अकॉर्डिंग टू मी। सो मोटो है, हमारा स्लोगन है, गल्ला छोड़ो आगे बढ़ो। दैट इज आवर स्लोगन फॉर द रिटेलर्स। क्यों? क्योंकि आप गल्ले पे बैठोगे तो आप और कुछ कर नहीं सकते, खाली नोट गिनोगे और आप कंट्रोल में हूं। लेकिन वैसा होता नहीं है। एक बंदा बैठा दिया, आपकी तरफ से नोट गिन सकता है और आप बहुत कर सकते हो, आपकी वैल्यू उससे ज्यादा। बट मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ? तो नाउ आवर अल्टीमेट एस्पिरेशन इज business should be able to run automatically without the owner's involvement. Right. आज ओनर का इन्वॉल्वमेंट डिसीजन मेकिंग में आता है कि मुझे क्या लेना है, किससे लेना है, क्या करना है। कई डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हमारा ये एस्पिरेशन है कि रिटेल वेयर ने एंटरप्रेन्योर को रिप्लेस कर देना चाहिए। Hmm. It should be an automatically runnable business. He is there to steer it, to give direction. बाकी चीजें सिस्टम ने करना चाहिए। नए वेंडर साइन अप करना वो उसका काम हो सकता है, बिल्कुल। वो कई चीजें इवेल्युएट करनी है, मशीन नहीं कर सकता। लेकिन Right. एक बार मैंने वेंडर साइन अप कर लिया, मेरा प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड हो गया, उसके बाद मेरा वहां काम नहीं है, बाकी सिस्टम ने करना। दैट इज आवर अल्टीमेट विजन, टू टेक रिटेलर्स टू दैट स्टेज। Right. We want to make entrepreneurs jobless in short. But Right. rich, jobless but rich. Yeah, yeah, completely understand that. Right. I would ask you one more question and then I'll basically hand over to Vivek, right? Uh, so, see, you've been a bit proactive in taking up the course, right? And you've been completely proactive in implementing the stuff with your product as well, right? So, what exactly is that one piece of advice you would like to give to the people who would take the same course? आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये कोर्स अगर आप साइन अप कर रहे हो तो दिल से कीजिए, सिंसियरली कीजिए। डोंट जस्ट थिंक दैट यू आर एडिंग वन मोर स्किल टू योर रेज्यूमे और पोर्टफोलियो। डोंट टेक इट लाइक दैट। Right, टेक right, इट एज अ मिशन फॉर लाइफ। This is what is going to drive your future and define you as a person or a professional or a company in the future. right. That should be the approach while doing this course. Otherwise, don't do it. Don't waste your time. But if you're not doing it anyway, your future is in the past. It is not in the future. Right. I will say, log out from your email, put your phone arms away, and just concentrate on what is being taught. True. Very true. That's the thing. Yeah. True, sir. True. Yeah. Wow. That was such a wonderful session. I mean, I'll watch this entire recording again for sure. I'll end my series of questions with just one last question for both of you. In minimum possible words, in just one sentence, if you have to describe the overall value and impact of progression schools, agentic AI programs, how would you describe that in minimum possible words in a very small sentence? I don't know how to put it in a line or a phrase, but I'll tell you something that this course has helped us achieve something which no company in India is offering today. That is the biggest takeaway for us from this course, that we have been able to deliver something which nobody in the industry is offering today. I don't know outside India, but definitely not in India. I know my competitors, I know what they're offering. Nobody is offering that, and we have been able to do that. And that might really leverage us. So it has been not only a learning experience, but it has been a transforming experience for us. And it might alter the course of retail going forward. Our very, very best wishes and full support for that, sir. Thank you so much. I'm sure. And we'll need that again because Always. this journey never ends. Yeah. The technology journey never ever ends. So those who think कि ये हो गया तो बस अभी मेरे को सब आ गया, बकवास. Yeah. It This doesn't is work this like is just the beginning. that. Absolutely. Right. This is just a beginning. Absolutely. Absolutely. And thank you so much. Progression School has been a wonderful partner. I would say you're like a partner to us, technology partner to us, and a knowledge partner to us. And that is really contributed significantly to our knowledge, our products, and our customers' businesses. So the progression school is something that we can really count on, I must say. Thank you. Thank you so much for that, Navnath ji and Ajit ji. And y'all have never tried to just
चलो इसको अभी कंप्लीट कर लेते हैं. दैट्स वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. बस हमको ये सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा इतना अमाउंट डिसाइड हुआ है, ये हुआ है, 4 हफ्ते करना है, ये कोर्स करना है, खत्म हो गए. नहीं, यू ऑल हैव नॉट लिमिटेड इट टू दैट. दैट इज वेरी अप्रिशिएबल, बिकॉज आपने ये देखा कि वो कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होना चाहिए, ना कि वो कोर्स पूरा होना चाहिए. Right. एंड देयर इज अ बिग डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस टू. सो रियल अप्रिसिएशन फॉर दैट. Thank you so much for that. थैंक यू सो मच अजीत जी, नवनाथ जी. आई एम सो ग्रेटफुल आप लोगों ने टाइम निकाला इस कॉल के लिए. आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू. मैं कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूँ आप दोनों के प्रति. सर, फीलिंग इज म्यूचुअल. Yes, it's our pleasure Thank to be you. on the call. Yeah. Have a great day. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. थैंक यू सो मच.